Good afternoon. Good afternoon, everyone. स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा?
We'll wait for another 1 or 2 minutes, then we'll start. इसमें क्या हो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक ऐसा करते हैं हाँ ना से क्या फर्क पड़ता है फर्क तो Okay, so good afternoon, everyone. Welcoming all you to the 4th session of series of knowledge building sessions that we have planned. We started a couple of weeks ago and will continue for a couple of another weeks till maybe probably till April end, every Tuesday and every Friday 4 to 6 p.m. So in the last 3 sessions, I think we tried understanding channels, which we decided that out of 6 channels, we will first focus on 4 channels. And already we learned about 3 channels: religious leaders, PRIs, and volunteers. Another channel which we are supposed to understand is NGOs, which we'll schedule maybe probably in the coming weeks because Neelima is not available at this point of time. So we thought after channels we'll get into understanding the domains. So this is the first session that we are going to understand one of the domain in health, that is VHSND and health and wellness centers. So it will be followed by different topics in the health domain and also education and water. Then eventually we'll get into understanding the bigger picture of aspirational district collaborative. Then we will understand what are the different big bets that we are focusing on in days to come. So that's a planning ahead. So without wasting any time, I request today's speakers, Dr. Hegde and Dr. Bhavna, to introduce themselves and start the session. Thank you. Thank you, Shiva. Thank you for setting up this and inviting us to participate in this. I'm Dr. Shailendra. I look at public health innovations at Piramal Swasthya. I've been with Tribal Health Collaborative for the last couple of years now. I'm a public health specialist, been with Swasthya for about 6 years now. And the last couple of years, we've spent a lot of time on setting up and establishing tribal health collaboratives. But our work on the field with respect to the topic of the day, which is Health and Wellness Center, Village Health Sanitation Nutrition Day, and all these other interventions that we've been kind of now running, has been going on for some time now. Almost 4.5 years now, 2018 onwards, when we started the entire Aspirational Districts Transformation Program. That's when we really got our own experiences of running health and wellness centers and VHSNDs. But without any further ado, I will request Dr. Bhavna to
take us through the overall picture of the health and wellness centers as well as the Village Health Sanitation and Nutrition Day. Please feel free to put up your questions on the chat box or in the question and answer section. We'll try and address it there, or after the session, after she finishes, we'll take additional questions. We are free to take as many questions as you like, and happy to address those. Yeah, Shiva, good to go? Can I request Bhavna? Dr. Bhavna, can you please project and start the presentation? Yes. Hi, everyone. I'm Dr. Bhavna. I'm working with Promotional Swasthya since last almost 4 years now. I have experience of around 11 years in public health, or in previous to currently I'm working as a lead public health in Tribal Health Collaborative, but I had a good chance of working in aspirational district program before this program, and had good experience of having these interventions in field. So we will be discussing specifically talking about the health and wellness centers and VHSNDs in next 2 hours. And I'll try to speak in Hindi as much as I can, so that I can be more approachable. But in case there is any kind of confusion, any kind of, if I'm using too many too many complex words or maybe scientific words, please ask questions. We'll try to clarify as much as we can. So if we can we start with VHSND, Shiva sir, please? So VHSND जैसे आपने सुना होगा, ये VHSND और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं, ये हमारे दोनों ही प्रोग्राम्स जो हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, गुड इवनिंग मैम, हनुमान बोल रहा हूँ मैं। हाँ, गुड इवनिंग अहमद जी, कैसे हैं? ठीक है मैम, बढ़िया जी। मुझे लगता है काफी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ काम भी किए हैं, और अच्छा है अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी चैट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा है VHSND को करने में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को करने में, प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर चैट में शेयर करें, तो वो काफी लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। थैंक यू हेमंत। हाय हेमंत जी। तो जो VHSND जो प्रोग्राम है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, हेल्थ सिस्टम जो एकदम विलेज लेवल पे अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, चाहे वो हेल्थ की है या फिर न्यूट्रिशन की है, इसको एकदम बेसिक लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो प्लान हुआ है वो VHSND के द्वारा हुआ है। तो VHSND है क्या? बहुत सिंपल सा एक सवाल हो सकता है आप लोगों का कि ये विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन डे है। ये एक ऐसा दिन मनाया जाता है पूरे भारत में, जहां पर भी NHM के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर महीना एक दिन हर विलेज में आंगनवाड़ी, आशा और ANM आती है, और विलेज लेवल पे गांव में जो हमारे माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, या फिर बच्चे होते हैं जिनका टीकाकरण करना होता है, या किसी को फैमिली प्लानिंग की कोई सर्विसेज चाहिए होती है, या अलग अलग तरीके के परामर्श चाहिए होते हैं, एडोलेसेंट्स को जो सर्विसेज दी जाती हैं, ये सारे के सारे जो हमारे सर्विसेज है, ये VHSND के द्वारा प्रोवाइड करा जाते हैं, हेल्थ के भी और न्यूट्रिशन के भी। आप न्यूट्रिशन में कई बार कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई विलेजेस में, कई स्टेट्स में रादर ICDS अपना पोषाहार भी कई बार इसी पे बांटते हैं। बच्चों का वेट किया जाता है, जो हमारे अंडर नरिश्ड बच्चे हैं या अंडर वेट बच्चे हैं, उनका स्क्रीनिंग वगैरह भी किया जाता है। तो हम इस सत्र में यही समझेंगे कि एग्जैक्टली VHSND में उस गांव में उस दिन क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, और आंगनवाड़ी, आशा और ANM के क्या क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट।
अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रदेश की सरकार जो है वो हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से, हर कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सेवाएं दिलाने के लिए काम करते हैं। और इस समय जैसा मैंने बताया, माह में एक निश्चित दिन होता है हर गांव में, भारतवर्ष में, जहां पर ये VHSND का जो कार्यक्रम होता है, जिसको हम हिंदी में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस कहते हैं, इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें हर तरीके के सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, एडोलेसेंस हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर्स हो, चाहे वो हमारे कुपोषित बच्चे हो, इन सबको आगे की ओर रेफरल करने के लिए भी इस जगह पे सर्विसेज दी जाती है। नेक्स्ट। इसके उद्देश्य क्या है? जैसा आप लोग जानते होंगे कि इसका उद्देश्य बेसिक ये है कि हमें स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो सुविधाएं हैं वो एकदम डोर स्टेप पे हमें पहुंचानी है गांव-गांव में। और उसके अलावा गांव-गांव में स्वास्थ्य एवं पोषण से रिलेटेड जो सर्विसेज है, उनके लिए लोगों को मोबिलाइज करना भी, उनके लिए प्रोत्साहित करना भी एक उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पारंपरिक जो हमारे सेवाएं हैं, AAA जो हमारे आते हैं, उनके साथ समन्वय बिठाने के लिए भी इस कार्य को किया जाता है। कई बार समस्त जो हितकारिक एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की पोषण समिति होती है, VHSNC होती है, वो लोग भी कई बार इस दिवस में जो भी कठिनाइयां होती है, किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, उसको जानकर उसमें कई प्रकार से सपोर्ट करने के लिए भी ये दिन प्रोवाइड किया जाता है। गैप्स आइडेंटिफाई की जाती हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं गांव में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसका भी एक तरीके से गैप्स हमें यहाँ पर पता चलते हैं। इसके अलावा कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, योजनाएं जो सरकार के द्वारा और उसकी जो एलिजिबिलिटी है स्वास्थ्य एवं पोषण की, उसके बारे में भी कई सारी जानकारियां हैं जो गांव लेवल पे इस समय में दिलाई जाती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार के लिए भी कई तरीके के काउंसलिंग की जाती है, चाहे वो मैटरनल हेल्थ, मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में हो, बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में हो, इसके अलावा एडोलेसेंट हेल्थ को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके कई सारे काउंसलिंग्स जो है वो सब यहाँ दी जाती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जो उच्च जोखिम मामले होते हैं उनको पहचान करने के लिए और रेफर करने के लिए भी ये दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। देखिए, अगर 100 में कोई भी बेनिफिशरीज होती है, कई बार 100 में से देखा जाता है 80% जो हमारी बेनिफिशरीज होते हैं उनके पास आमतौर पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। सिर्फ 20% ही ऐसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको हमें रेफर करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है कि 80% लोगों को हम गांव में ही सर्विसेज दें, और जो 20% लोगों को है हम पर्टिकुलर उनका नाम दर्ज करके, उनका रजिस्ट्रेशन करके, उनको लाइन लिस्ट करके हम आगे हायर सेंटर पे लेके जा सके, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर है या बच्चे हैं या फैमिली प्लानिंग का कोई भी सर्विस है, वो ऊपर जाके हम प्रोवाइड कराते हैं। ऊपर जाके मतलब PHCs में या फिर CHC पे हम वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, जो अपेक्षित लाभार्थी हैं इसके लिए पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं होती हैं, आमतौर पे जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होती है, उनका एंटीनेटल चेकअप वगैरह सब यहीं पे होता है। इसके अलावा धात्री महिलाएं मतलब लैक्टेटिंग मदर्स जो होती है, उनकी भी सारी जो सर्विसेज है वो भी यहीं पर प्रोवाइड की जाती है। 0 से 5 वर्ष के बच्चे जितना भी वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, VHSND पे ही होता है। तो गांव की महिलाओं को अपने बच्चों को किसी हायर सेंटर में लेके जाने की या गांव से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं के गांव में ही कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी सेंटर पे, स्कूल में या किसी सोशल जो प्लेस होती है, कई बार ग्राम पंचायत का जो भवन होता है वहां पर भी ये सर्विसेज दी जाती है और बच्चों को लाके वहां वैक्सीनेशन दिया जाता है। इसी प्रकार से किशोर किशोरियों को यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और योग्य दंपति जो हमारे 15 से 49 वर्ष के जो भी हमारे विवाहित महिलाएं एवं उनके पति होती है, उनको भी इसी प्लेटफॉर्म पे
अलग अलग तरीके की सर्विसेज दी जाती है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आगे बच्चा करने के लिए हो, अलग अलग सर्विसेज जो है वो सबके सब यही प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर जो सर्विसेज दी जाती है, अगर आप गर्भवती महिलाओं को देखोगे तो कई बार शीघ्र पंजीकरण जो होता है, आमतौर पे जब हम गांव में जाते हैं तो ये अपेक्षा कई बार जो महिलाएं हैं या ये बहुत कमजोर वर्ग है हमारी सोसाइटी का, तो इनका जो बेसिक एंटीनेटल चेकअप है जब प्रेग्नेंट होती है कोई मदर, तो उसका पंजीकरण करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, गवर्नमेंट डेटा में उसका रजिस्टर करना, उसको प्रसव पूर्व जो जांच है उसको करना, छोटी छोटी जो चेकअप्स है जैसे बीपी चेक करना, हीमोग्लोबिन चेक करना, प्रोटीन वगैरह मूत्र में जांच करना या पेट की जांच करना, वजन मापना, HIV की जांच, और उच्च जोखिम जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनका प्रबंधन और प्रोटोकॉल जो भी हमें करना है उसको संदर्भन करना, रेफरल करना, वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे की जाती है। इसके अलावा IFA की गोलियां वितरित करना, कैल्शियम की गोलियां वितरित करना, TT के इंजेक्शन लगाना, ये सारे के सारे जो हमारे सर्विसेज है, ये सारे के सारे उस दिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट, और ये हर महीना होता है, तो आइडियली देखा जाता है तो कम से कम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कम से कम 4 बोला जाता है कि कम से कम 4 उनकी विजिट्स होनी चाहिए। बट अगर अब जो नई गाइडलाइन VHSND की आई है तो हर महिला को हर महीना VHSND पे आके अपना चेकअप कराना जरूरी है। नेक्स्ट, तो गर्भवती महिलाओं को जो सभी सेवाएं दी जाती है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया, इसके अलावा कैल्शियम की गोलियों का वितरण करना, आंगनवाड़ी पे राशन भी प्रेग्नेंट मदर को मिलता है, THR कई बार बोलते हैं उसको, तो वो भी प्रोवाइड करना, टेटनस का टीका लगवाना, या प्रसव योजना जो हमारी है उसको बनाना, दैट मीन्स बर्थ प्रिपेयर्डनेस हम कहते हैं उसको। हम लोग आखिरी जो 3 महीना होता है उसमें प्रसव कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाएगा, ये सारा का जो प्लानिंग होती है ये सब भी VHSND पे ही होती है। उसके अलावा जो जरूरी सलाह है, चाहे वो आयरन कैल्शियम कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह आराम करना चाहिए, पौष्टिक आहार कौन कौन सा दिया जाना चाहिए, तो इस सब के बारे में भी जानकारी जो है VHSND पे गर्भवती महिला को मिलती है। तो आमतौर पे जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जिसको उसको जो बेसिक सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए, इम्पोर्टेंट मिल है, वो इस जगह पे दिए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई हमें कॉम्प्लिकेटेड मदर मिलती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंट वुमेन की स्थिति मिलती है, उस संदर्भ में उसे हम उसी प्रकार से रेफर भी करते हैं और उसको ट्रैक भी करते हैं, और उसकी ट्रैकिंग का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहीं से शुरू होता है। सेम जैसे हमने गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया, दात्री महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार की सेवाएं दी जाती है। जैसे दात्री महिलाओं को IFA टैबलेट देना होता है 6 महीने तक, कैल्शियम की टैबलेट्स देनी होती है 6 महीने तक, उसका पूरा प्रबंधन यहाँ किया जाता है। इसके अलावा अगर फैमिली प्लानिंग का कोई भी काउंसलिंग एक लैक्टेटिंग मदर को करनी होती है, वो सारी सर्विसेज भी यहीं पे प्रोवाइड की जाती है और आगे की ओर रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको अलग अलग ऑपरेशन करना है या अलग चीजें करनी है, वो काउंसलिंग करके उनका लाइन लिस्टिंग करके आगे जो हेल्थ सेंटर होते हैं, चाहे वो धात्री महिलाएं मीन्स लैक्टेटिंग मदर्स, ये जो धात्री महिलाएं होती है इनको हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए अगर अप्लाई करें तो वो लोग भी इसी तरीके से हम इनको इन जगहों पे जैसे PHC पे या सब सेंटर या बड़े अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। इसी प्रकार से 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग कुछ सेवाएं इसी दिवस पे दी जाती है। इसमें नवजात शिशु का जो जन्म पंजीकरण होता है वो इसी जगह पे किया जाता है। टीकाकरण जैसे BCG है या OPV है, पेंटावेलेंट है, जो अलग अलग 5 साल तक जो अलग अलग उसको वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, वो सारे वैक्सीनेशंस भी जो दिए जाते हैं वो सारे भी इसी सर्विस पे दिए जाते हैं। जिस दिन जिस बच्चे का जो भी वैक्सीन होता है उसे वो आशा गांव से बुला के लेके आती है
और उसका वहां पर वैक्सीन होके डॉक्यूमेंटेशन होता है। एक MCH कार्ड होता है जो प्रेग्नेंट मदर होती है तब से वो शुरू होता है, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे वो MCH कार्ड जब इवन डिलीवरी के बाद भी वो बच्चे के लिए भी वो कंटिन्यू होता है। तो उसमें डॉक्यूमेंट होता है इवन जब उसकी एंटीनेटल चेकअप से लेकर इवन बच्चे के डिलीवर होने से के बाद उसकी वैक्सीनेशन तक के लिए भी वो आगे तक कंटिन्यू करते हैं। तो जिस बच्चे की जिस समय बारी होती है उस हिसाब से वो वैक्सीन लगाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में अगर हाँ MCP कार्ड होता है, वो मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। जी, आई कैन यूज इंग्लिश, यस। सो इसके अलावा बच्चों में जो होने वाले डायरिया और निमोनिया के का जो उपचार होता है या प्रभाव होता है उसके बारे में भी डिस्कशन होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, और उसके अलावा ORS जिंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम इसमें करते हैं। सो VHSND में जो सर्विसेज दी गई हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड। So nutrition related services specifically are from the ICDS department. So ICDS department provides services at the VHSND. So हमारे यहाँ पे this is village health and nutrition as well. So यहाँ पर जो अभी तक की जो सर्विसेज हमने बोला था, ये आशा जो है वो लोगों को मोबिलाइज करके इस जगह पे लेके आती है, और वहां पर ANM आती है, ANM दीदी आती है वहां पर उस गांव में उस दिन के लिए, और सारी दवाइयां लेके आती है, पूरे अपना इक्विपमेंट्स लेके आती है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जो हमारी पोषण की सेवाएं है, ये आंगनवाड़ी जो दीदी होती है ये सारी सर्विसेज उस जगह पे प्रोवाइड कराती है। वहां पर 0 से 5 वाले सब के बच्चों का हमारा जो वजन है वो लेते हैं यहाँ पे, उसकी निगरानी करते हैं, और जो कार्ड होता है उसमें उसको अंकित करते हैं। सो many of the registration happens, and the kids are weighed every month on this platform, and it is documented on maternal and child protection card. There is a weighing graph, जो वृद्धि चार्ट जिसको बोलते हैं, वेट चार्ट बोलते हैं, वहां पर भी every month this chart में that is filled, and to ensure that the kid is not undernourished. So if the kid is undernourished, underweight, so accordingly the screening is done, whether if it is malnourished kid and SAM or MAM, severely malnourished kid or moderately malnourished kids. So accordingly the treatment is done through through ANM, and later on referred if needed. Also, there is a MUSC tape that is used through ASHA, which is very useful to ensure that if there is any kind of severely malnourished kids, although under Poshan Abhiyan too, there has been a lot of emphasis on procurement of weighing things like infantometer has been there. So there are lots of other equipments that have been procured by ICDS department. In case we don't have those equipments available with Anganwadi, MUSC tape really helps in identifying the SAM and MAM kids over there. Also, if such kind of SAM and MAM kids are identified, these kids are later on taken up and referred to the another nearby health center, where the needed care is given, and later on if needed there are NRCs at every district where there is a higher level of intervention is done for severely malnourished kid. But at the end of the day, the screening happens at this place, the VHSND there. So that is very important important part of it. Also, and also in addition to all these things, the antenatal mothers and lactating mothers are also provided nutrition related counseling.
the counseling regarding the exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding matlab, as soon as the child is born, we exclusively give only mother's milk, not even a single drop of water. Even if the kid is not feeling well, only and only mother's milk is given till 6 months, till the baby is 6 months. Only mother's milk is given. So this kind of counseling is also given on this. And also, so once the kid is around 6 months, what kind of food should be provided to that kid, because these small kids are already coming for immunization and other things. So this kind of food, like what kind of complementary food other than mother's milk after 6 months, that kind of information is also given in these places. Also, there's a protocol of giving the कृमिनाशक ड्रग्स बोलते हैं उसको, एल्बेंडाजोल की टैबलेट देते हैं, जिसमें कि जो भी अगर कई बार हमारे बच्चों में कीड़े होते हैं पेट में या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है, तो देयर आर मेडिसिन्स दैट आर गिवन. सो ये 1 से 5 साल तक दिए जाते. इवन द मदर्स आर आल्सो गिवन एट दिस प्लेसेस. सो दैट अगेन इज प्रोवाइडेड एट दिस प्लेस. After that, 7 months to 3 years. So there is a provision of providing food, ready-made food. Also, that also happens sometimes at these places again. Also, distribution of iron folic acid tablets is again identified at this place. The anemia identification and actually menstrual hygiene like counseling is also provided to and adolescent girls at these places. Next. So 0 to 5 level kids are also, yeah. Bhavna, Shailendra here. Maybe we'll take a pause. It's been about 30 minutes now. If there are any questions which are relevant to this, like how there are some questions coming on the chat box, if there are other questions, if anybody wants to ask, they can probably. Shiva, can everybody ask questions? It's a large gathering, Doc. So better to put it on the chat box. Okay, understood. We can read the questions from the chat box and keep answering. Okay. Okay, understood. Okay, so anyway, so I just wanted to let everybody know that please apna questions chat box mein daliye. We will try and answer most of those questions. And Bhavna is anyway using both languages. I hope everybody is comfortable with both Hindi and English. I think those are the two languages that between us we know. I don't think. Yeah, I mean, I hope I'm not using too much of English or too much of Hindi. So agar just let me know if people are comfortable with English. I thought that it will be good to have Hindi for this presentation. Otherwise, I would have presented in English. I hope that's okay to the audience. Yeah, if you have any questions, if you want us to make some changes, please let us know in the chat box. Can you see some questions, Doc, on the chat box right now? Okay, I'll try and address those. Yeah. I have answered a couple, one or two, but the rest of it, I think people themselves are also answering. Okay, cool. So Bhavna, you can continue. I will keep answering on the chat box. Okay, sure. So परिवार नियोजन जो हमने यहाँ पे लिखा है, it means family planning. So eligible couples जितने भी उस गांव में होते हैं, योग्य दंपति means eligible couples. So जितने भी लोग वहां पर available होते हैं, तो उनको सभी all the family planning services we whatever are available within the system, that kind of information is given. And distribution of some of the key items within this basket of choice is also provided. For example, VHSND mein there is a distribution of condoms, any ECP pills, and also the oral pills.
in addition to this, all kind of services are provided specifically around the spacing methods or termination methods. स्पेसिंग मेथड मतलब IUCD से रिलेटेड जितनी सारी सर्विसेज है उसके बारे में अच्छे से जानकारी दी जाती है, और ये बताया जाता है कि कितना स्पेस करना चाहिए दो बच्चों के बीच में, और उसके लिए क्या क्या हमें मेथड्स यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वो भी सब इसी लेवल स्कीम पे पर देने कुछ आ का गया है। प्रावधान है। जी कैसे आ रहा है? Actually, someone maybe must be using that edit वाला option. शिवा, इसका आंसर अभी तक हमको भी नहीं मिला। आ जाता है ये आ जाता है, ये पूछना पड़ेगा। ये कोई रीचा है वही कर रही है मैम। जो को होस्ट या होस्ट है ना, वो एनिमेट में जाके अगर क्लियर ऑल कर देंगे तो हो जाएगा। एनिमेट वाला जो ऑप्शन आता है ना, एनोटेट, हाँ एनोटेट में, हाँ मैं जाके क्लियर ऑल कर देंगे ना, क्लियर ऑल ड्राइंग तो हो जाएगा। कर दिया। कलम कहाँ है? वही तो कलम है, मार्कर है, कलम है। So जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किशोर स्वास्थ्य को लेके कई सारी एडोलेसेंट हेल्थ को लेके कई सारे क्वेश्चंस एडोलेसेंट्स में होते हैं। तो और ये सारी जो क्वेश्चंस है, इसका आंसर या इसका डिस्कशन का भी प्रावधान VHSND की सर्विसेज पे अवेलेबल है। तो VHSND में हमें किशोर किशोरियों को जो एडोलेसेंट गर्ल्स है या बॉयज है, उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। उन्हें न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके या क्या बीमारियां हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फॉर अ बेटर हेल्थ केयर ऑफ एनी वुमेन, उसके बारे में भी VHSND पे जानकारी देने का प्रावधान है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी जो ये वाला स्लाइड है, ये बेसिकली ये बताया जा रहा है कि VHSND लेवल पे किस किस तरीके के परामर्श देने का प्रावधान है। स्पेसिफिकली जो हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ या फिर एडोलेसेंट हेल्थ में जो हम अभी तक बात कर रहे थे, इसमें जिस भी तरीके के हमें सेवाएं दी जाती है परामर्श की, उसके बारे में ये बताया गया है। एडोलेसेंट हेल्थ में अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो शीघ्र पंजीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितनी जल्दी प्रेग्नेंट मदर अपने आप को रजिस्टर करती है, उतने अच्छे से हम उसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बारे में काउंसलिंग करना और प्रसव पूर्व देखभाल करने के जो लाभ है, उसके बारे में इस जगह पे काउंसलिंग की जाती है। IFA और कैल्शियम का नियमित किस तरीके से सेवन करना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, या व्हाट इज द नीड ऑफ दैट IFA tablet, why it is used, how and it should be consumed, all that kind of counseling is given over here. And also what are the complicated warning signs of antenatal during pregnancy, what are the key warning signs is again discussed over here. And also how soon we should actually start giving breastfeeding small newborn kids as soon as they are born, is again some kind of counseling is given at this platform. इम्यूनाइजेशन के अराउंड जो काउंसलिंग की जाती है वो यहाँ पे दी जाती है। फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग कराई जाती है। न्यूट्रिशन के लेवल पे यहाँ पर कई तरीके की काउंसलिंग की जाती है। कब बच्चों को खिलाया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए, और समुदाय में किस तरीके से सही विवाह का क्या समय रहता है। किशोर एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स को किस तरीके का पोषण एवं प्रजनन तंत्र के आसपास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आसपास का संबंधी जानकारी दी जाती है। ऑल्सो वेरियस
various schemes that are there for health, specifically around JSK, JSSK, even Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana, where there is a provision of providing where doctor comes at the level of block PHC or CHC and provides services to the second and third trimester pregnant mothers and HRPs, high risk mothers that are identified during VHSND. So all these kind of services that are provided by government, all these kind of counseling is given at this platform. Next. So in next few slides, we will specifically talk about what is the duties, what are the responsibilities of Asha, Anganwadi and rest of the people who are supposed to come at this VHSND. So VHSND में कई बार आशा जो है, आशा, who is Asha? I hope you all guys know. Asha is specifically a woman who is from that particular village only and who helps in mobilizing the beneficiaries for various health programs in India. So specifically, if we talk about VHSND related, so it is her work to mobilize people to make sure that people are coming to the VHSND. Also to ensure that the people are ensuring they are coming to this place. Also the line listing of these beneficiaries is done. Also to ensure that all the things that are required at the level of VHSND are there. So अगर VHSND को आज की डेट में हम इमेजिन करें कि कैसा होगा, तो VHSND ऐसा होता है कि एक टेबल होता है, वहां पर कुछ कुर्सियां लगी होती हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो ड्रग्स, इक्विपमेंट्स हमको एंटीनेटल चेकअप के लिए चाहिए, इम्यूनाइजेशन के लिए चाहिए, फैमिली प्लानिंग के लिए चाहिए, तो वो सारा सामान वहां पर रहता है। बगल में एक छोटा सा एरिया बनाया जाता है जहां पर हम प्रेग्नेंट मदर का चेकअप वगैरह किया जाता है। उसमें अच्छे से एक स्क्रीन होना चाहिए, पर्दा लगा होना चाहिए, बेड होना, सॉरी, तो वहां पर पानी की सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा वहां पर टॉयलेट होना चाहिए नियर बाय। तो ये सारी, पानी पीने की, हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारा जो सत्र का की जो तैयारी है, इसके लिए आशा और आंगनवाड़ी और एएनएम का सपोर्ट करना भी आशा का एक दायित्व है। इसके अलावा जो हमारी ग्राम स्वास्थ्य में जो भी हमारी आशा डायरी है, उसमें नियमित ब्रह्म के दौरान जो लिस्ट बनी हुई है, उस हिसाब से लोगों को वहां पर लेके आना और एएनएम के साथ अपनी ड्यू लिस्ट को शेयर करना, वो भी एक कार्य जो है वो आशा का रहता है। नेक्स्ट। सो आंगनवाड़ी जो कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट से है, उनका बेसिकली काम रहता है कि अपने बेनिफिशरीज को लेके आना। जैसे हम उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनका उनको वेइंग करना होता है, या फिर उन्हें लाभार्थियों को सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो इंश्योर करना कि वो मिल रही हैं कि नहीं। जो उन्होंने अंडरवेट बच्चे लेके आए हैं, उनका स्क्रीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। टेक होम राशन जो हमारा रहता है, या फिर वो सारी सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए। मदर्स के लिए होती है, वो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए होती है, वो सब चीजें वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची है। 0 से 1 साल के वर्ष और 1 से 5 साल के बच्चों की उन्हें सूची बनानी होती है और उसको उन्हें आशा के साथ अपना शेयर करना होता है। तो ये सारी जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो यहाँ पर होना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे पोषण दिवस पे जो आशा कई बार अवेलेबल नहीं होती है, तो कई बार आशा का काम भी, सपोर्ट भी, मोबिलाइजेशन के लिए वो आंगनवाड़ी आके उसको करती है। और जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको या फिर जो बच्चे छोटे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करना जरूरी है, उनको लेके कई तरीके से हम काउंसलिंग करना, वो भी एक काम जो है वो आंगनवाड़ी का रहता है। इसके अलावा तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा
VHSND पर जो भी कई बार अगर आंगनवाड़ी लेवल पे अगर VHSND हो रही है तो आंगनवाड़ी लेवल पे भी आंगनवाड़ी सेंटर को खोलना और वहां पर सभी तरीके की सुविधाओं को प्रोवाइड करना भी आंगनवाड़ी का एक कार्य रहता है। एएनएम का जैसा हमने भी बताया, एएनएम का काम रहता है कई बार ये देखना कि जो भी जो चीजें VHSND के लिए जरूरी है आशा और आंगनवाड़ी द्वारा वो सब उपलब्ध हुई है कि नहीं हुई है, और जो भी आईसी मटेरियल है, खासतौर पे जो हमारा VHSND का एक बैनर रहता है या कोई भी आईसी मटेरियल जो हमें वहां दिखाना है वो वहां पर है कि नहीं है। इसके अलावा क्या परामर्श करने के लिए सही जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम ओपनली हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर रहता है, तो उस तरीके का वहां पे सुविधा है कि नहीं है। इसके अलावा आंगनवाड़ी में जांच करने के लिए पेट की जांच करनी है, तो जैसा मैंने बताया कि वहां उसकी व्यवस्था है कि नहीं, बेड, पर्दा, ये सब चीजें हैं कि नहीं है, और जो भी सामान हमें जरूरत है वो सब वहां पर अवेलेबल है कि नहीं। और इसके अलावा एमसीपी कार्ड पे जो भी सर्विसेज वो दे रही है उसको वहां पर डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, जो कि एक एएनएम का एक अधिकार रहता है। इसके अलावा जितना भी उसकी द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विसेज उसने प्रोवाइड कराई है कि नहीं हुआ, चाहे वो आरसीएस रजिस्टर्स को भरने की बात है या फिर आंगनबाड़ी और आशा का सपोर्ट करने की बात है, या फिर वो किसी भी तरीके का जो सर्विसेज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में देना है, इम्यूनाइजेशन का काम है या फिर काउंसलिंग का काम है या सैम मैम बच्चों को आइडेंटिफाई करने का काम है, ये सारा काम जो है वो एक एएनएम का होता है। सो एएनएम बाहर से आती है, आंगनवाड़ी और आशा जो है वो उसी गांव के हैं, तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करना हेल्थ से रिलेटेड उसका जितना भी काम हमने डिस्कस किया वो सारा यहाँ पे एएनएम का काम रहता है। नेक्स्ट, आई थिंक इट्स ऑल रिपीटेड। नेक्स्ट, जो भी हमारा ये ओवरऑल पर्यवेक्षण रहता है इसमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं इसका भी एक तरीके से मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी जो गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और अगर कोई गैप होती है या किसी भी तरीका का इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो उसका हमें गैप आइडेंटिफाई करके सही जगह पे इसका डिस्कशन किया जाता है और आगे की सर्विसेज बेटर प्रोवाइड की जाती है। पर्यवेक्षण मीन्स एक तरीके से मॉनिटरिंग पार्ट होता है। अभिलेखीकरण इज इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इट्स प्रत्येक गांव में जो ये सर्विसेज दी जाती है इसका एक टेली शीट बनता है, इसका एक प्रॉपर शीट बनता है, आशा के पास बनता है, एएनएम के पास बनता है, और वो शीट जो है वो स्पेसिफिकली एएनएम के पास भी रहता है, आशा के पास भी रहता है, और वो बहुत सारी ब्लॉक लेवल पे भी रहती है। और अगर कोई उच्च जोखिम वाली या हाई रिस्क प्रेग्नेंट मदर है या बच्चे हैं उनको वो टाइमली वो प्रोवाइड की जाती है ब्लॉक लेवल पे वो शीट, और उनको सही जगह पे ट्रैक किया जाता है कि आइडियली कि इन लोगों को हमें ब्लॉक लेवल पे सर्विसेज देनी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्विसेज देनी है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एमसीपी कार्ड पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, एमसीपी कार्ड पे सारा डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वी कैन शेयर एमसीपी कार्ड का एक सॉफ्ट कॉपी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें हर महीने का भी प्रावधान है, जो नया एमसीपी कार्ड आया है उसमें सारी जो भी सेवाएं दी जाती हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि किस माँ का कितना वेट था, कितना बीपी था, और कब उसने किस महीने में उसको अगर कोई प्रॉब्लम है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब उसका बच्चा पैदा होता है तो किस महीने में उसको कौन सा टीका लगा है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका वेइंग का डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उस किस महीने में उस बच्चे का क्या वेट था। और उसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे शीट्स है जिसमें ये बताया जाता है कि
किस तरीके का खाना हमें देना चाहिए, किस तरीके का हमें बच्चे को किस तरीके से उसका मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ की क्या गुड साइंस है और क्या वार्निंग साइंस है, वो सारा एमसीपी कार्ड पे है. तो I will share that with everybody of you. We can share that over mail, और आप उसको प्लीज देखिएगा और आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन उस एमसीपी कार्ड पे मिल जाएगा. Any questions now? So let's check in the chat box, Bhavna. So I'm stopped sharing the screen. Actually, I'm using my phone. My No laptop is problem. broken. So मुझे So मैं that's देखता why हूँ. I'm not. Yeah. मैं देखता हूँ. 1 second. I think I'll just pick up one question. Who has the responsibility to organize VHSND in the village? What is the role of Piramal's Health in this? Parvez Khan has asked this. So the responsibility to organize VHSND lies with the ASHA worker, the Village Health Sanitation and Nutrition Committee, as well as the A&M of that particular village. So the 3 A's, the triple A's of any village are ASHA worker, A&M and Anganwadi worker. Now, typically, all of these are from the same community. And so Village Health Sanitation and Nutrition Day implementation, organizing that will benefit their work in the village. And so the responsibility also lies with them. But Anganwadi worker is not an employee of the health department. She's an employee of the ICDS, the Integrated Child Development Services Program of the Ministry of Women and Child Development. And so typically the responsibility of actually organizing VHSND falls on the ASHA worker and the A&M. In order to supervise the Village Health Sanitation Nutrition Day, to ensure that it is happening, to improve the governance of VHSND, you have the Village Health Sanitation and Nutrition Committee. And each committee, that committee is supposed to be sort of responsible for ensuring that the Village Health Sanitation and Nutrition Day happens in that particular village, right? Just to continue that, I think, Pratishtha, your question about for ASHA, A&M, Anganwadi, is VHSND only responsibility? No, they have multiple things to do. VHSND is one activity in a complete list of things that they do. Okay. One activity of these 3 workers is Village Health Sanitation and Nutrition Day. The other activities, for example, Anganwadi worker is responsible for the nutrition of the children under the age of 6 years and pregnant mothers and lactating mothers. A&M is responsible for the health of that entire village, literally. And ASHA worker is basically a community representative. She's not an employee of the health system. She is a community representative. She's an activist, so to speak. She's supposed to be creating Jan Andolan in the villages for various health related activities. So there are many more activities in their roles, VHSND being one of them. Any other big question? So one question that was along with that question was that our role there in Piramal's role there in VHSND. Yeah. So Bhavna, please go ahead. Yeah. So I was really looking forward for this question, and thank you for asking that question. And the idea of VHSND is to provide basic services that needs to be there in the village. So the pregnant mother and everybody comes out of their houses and services is there, like do gali chhod ke there, that across 2 streets there is a service available. So our role in specifically in ADT program was to ensure that this service is provided and is provided as per the guidelines. In very first phase, what we did was to ensure that
the availability of AAA is there. So when we started, and whenever you will go in your respective places and see a VHSND, the biggest issue is to see that the AAAs are available at these places. So all the people are available there. The due list is prepared. The people are mobilized. So what we did was to see that all these basic things are being done. We started with one VHSND per block. Our team, many of them are right now in this meeting. So what we did, that we started with one VHSND per block, identified the key issues, solved those issues, shared the findings with the government, and there is a provision of monitoring, like supervision, like many of you we discussed right now, that monitoring, yeah, supervision is very important from the health system. So there is a provision under PIP, under NHM, that 20% of these VHSNDs needs to be monitored or need to be supervised by mid-level supervisors. So there is a long list of supervisors that are available at the block level in health system. Specifically, there are block program manager, block community mobilizer person is there. There are various health department people like health education officer, health supervisors, the supervisor of ANMs are there. We call them lady health visitor is there. Then we have ASHA supervisors. So there is a list, almost 10 to 12 supervisors who are supposed to go in the field and see whether these VHSNDs are as per the protocol. So what we did as Pyramid there is to ensure that these supervisions are being done as per the criteria. We actually ensured that the supervisory cadre understands that it is not the monitoring, but it is the mentoring that should happen within the field. So what these people do, what we ensured that we handholded them, we did some trainings around their mentoring skills, improving their mentoring skills, which was later on supported by government money as well. They supported us in this program. And what they did later on, that these people, firstly only we were going in the field and she's thinking and asking AAAs what is the gap for them, what is the problem that they are facing. But later on what we realized is that these people are supposed to go there and ask these people. So what they used to do, they used to go and just boss around, ye kyun nahi hai, wo kyun nahi hai, wo kyun nahi hai. So we handholded these supervisors to go in the field and understand what are the problems these guys are facing. अगर वो weighing machine नहीं लेके जा रही तो क्यों नहीं लेके जा रही, अगर वो वहां नहीं पहुंच पाई थी तो क्या नहीं करके गई. So वो उनको हैंड होल्ड करना हमारा बेसिक मकसद था. और इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हुए और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सपोर्ट किया. और ये देखा गया कि जो ना केवल AAA की अवेलेबिलिटी, बट ऑल्सो वहां पे दवाइयां अवेलेबल थी कि नहीं, सारी महिलाएं आई थी चेकअप के लिए कि नहीं की, और उसके आसपास गवर्नेंस सेटअप करना. सो अगर हमने 40 VHSNDs हमने एक ब्लॉक में देखी है, तो उसका डेटा ब्लॉक लेवल पे प्रेजेंट करना कि देखिए आपके यहाँ पर ये इशू है और ये सिस्टम के इश्यूज है, किसी एक ANM या आशा के इश्यूज नहीं थे. तो सिस्टम को सपोर्ट करना is something that Pyramid did over the period of time. And gradually what happened, that system is taking it up right now. So system is monitoring as per the protocols, and also they are ensuring the drugs and everything's reached till last mile. Otherwise the mobilization goes nowhere. So ensuring that is what we call a health system strengthening. So we are not doing any kind of innovations. We are ensuring the guidelines which are there in the field are followed up, and the supervision part of happens, mentoring happens rather than monitoring. So which actually helped us in ensuring lot of gaps, overcoming lots of gaps, because 80% of the issues can be solved in public health at the VHSND only. This is also my thought on this, that if we do this one activity properly at the village level, 80% of the problems are solved, and rest the 20% of the
issues that are there, that if the proper documentation happens, that can be tackled up later on. So इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी काफी कुछ कम हुआ, लोगों को हर चेकअप के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, गांव में ही रहना पड़ा. इज समथिंग दैट वी ट्राई टू डू. I hope I have answered your question. Dr. Shailendra, you want to add anything to this? Am I audible? Hello. Yes, Bhavna ji, you are Yes, audible. Bhavna, you are audible. Okay. I hope I have been able to answer your question. Anup, you would like to add anything? I guess you have been part of that. So basically, like whatever you are telling is the right thing. So basically, like if we want to understand VHSND in one line, it is a package of comprehensive health services of maternal and childhood at the doorstep of the community. So the thought was this, like services can be given at the doorstep of the community. So this concept was initiated under NHM in 2005. So after that, like when it comes to VHSND, it is a beautiful platform where we see integration of different aligned departments, which are nutrition department, health department. PRI is also involved into some extent, and their role is to provide logistic if needed. They also act as community monitoring system, community mentoring system for this particular platform. And basically this platform also acts as a platform where people are getting counseling on different a beautiful platform where comprehensive services are delivered. और अंत में मैं जो मतलब ब्रीफली इसको समराइज ये कर सकता हूँ कि इसमें लोगों को सेवाएं मिलने के साथ साथ उनको परामर्श भी दिया जाता है, उनको सारी चीजें बारीक रूप से समझाई जाती हैं. और अगर जैसे आपने भी कहा था भावना जी शुरू में, अगर हम लोग इस प्रोग्राम में अगर अच्छे ढंग से काम कर पाए, तो ये जब हम मातृ और स्वास्थ्य शिशु के संकेतकों के संदर्भ में बात करते हैं तो उनको हम काफी अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं. और शुरू में जब हम लोग बात भी करते हैं, जब हमारा ये एडीसी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, when we initially started our ADT program, so VHSND was the major activity which almost impacted more than 20 indicators. तो जब हम नीति आयोग के अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में बात करते थे जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से संबंधित थे, उसमें 20 से ज्यादा ऐसे इंडिकेटर थे जिसमें अगर हम VHSND में बहुत अच्छे तरीके से काम करें तो उन इंडिकेटर को इम्पैक्ट कर सकते हैं. उदाहरण के लिए जब हम लोग बात करते हैं भाई टीकाकरण एक प्रमुख इंडिकेटर है, so VHSND is a platform to provide large scale immunization to various age group, चाहे वो हम लोग गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग शिशु के संदर्भ में बात कर रहे हैं. फिर शुरू में जब अगर हम देखते थे कि देयर वर लाइक सर्टेन नंबर ऑफ मैटरनल इंडिकेटर्स, वो भी हम जब VHSND के माध्यम से काम करते थे तो अलग अलग इंडिकेटर थे, जैसे ANC के कवरेज को बढ़ाना है, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंक्रीज करना है. तो ये सारे जितने अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हैं, इन सबको हम लोग VHSND में काम करते हुए हम लोग इन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते थे. तो VHSND के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने मिलजुल के सबने बहुत अच्छा काम किया. जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम थी, उन्होंने जब ये शुरू में जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब हम VHSND के संदर्भ में बात करते हैं तो ये तो सबको मालूम है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग तरीके से सर्विस दी जानी है. तो जब हम लोगों ने शुरुआत में पूरी एनालिसिस की, गैप एनालिसिस की, तो ये देखा कि हाँ लिखित तौर पे तो काफी सारी सेवाओं का प्रावधान है, लेकिन फिजिकली ये सेवाएं उतने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं रही है. तो फिर देन वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग सम मॉडल साइट. फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कुछ मॉडल साइट लेंगे और जब यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो जो विदित है, जो गाइडलाइन कहती है, उसके अनुसार काम करने की कोशिश करेंगे. और धीरे धीरे हम शुरू में उन चीजों पे काम करेंगे जिसपे आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं, और जो थोड़ी सी जिसमें ज्यादा लॉजिस्टिक्स और इन सब की जरूरतें होंगी उनको हम धीरे धीरे ऐड ऑन करेंगे. तो इस पूरी कड़ी में हम लोगों ने शुरू में कुछ पायलट साइट्स थी, उनका चिन्हीकरण किया, उनमें नियमित रूप से काम किया,
और द थॉट विच वाज बिहाइंड VHSND टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सर्विसेज, उस पर हम लोगों ने मिलजुल के काम करना शुरू किया। हम लोगों ने जो पोषण विभाग एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उसके साथ काम करने की शुरुआत की, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करने की शुरुआत की। जो जो सर्विसेज कहीं ना कहीं उस VHSND से छूट गई हैं, जैसे फॉर एन इंस्टेंट की वहाँ पे काउंसलिंग की सर्विसेज उतनी बेहतर तरीके से नहीं दी जा रही हैं, तो हम लोगों ने उस एस्पेक्ट से उस पर काम करना शुरू किया। उन मॉडल साइट में जो फ्रंटलाइन हेल्थ फंक्शनरीज हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, ANM है या आशा हैं, उनकी क्षमताओं को बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। सो वी ट्राई टू invested on building capacities of these frontline health functionaries, और धीरे धीरे these site became a model site for the district। और डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि अगर हम ब्लॉक में एक मॉडल साइट कर सकते हैं, why we can't do more site। तो फिर डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि भाई अब एक नहीं करेंगे, 1 से 5 करो, 5 से 40 करो। देन वी हैड एडिक्वेट नंबर ऑफ सैंपल साइट, एक एक ब्लॉक में 40 साइट हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। और एक गवर्नमेंट ऑफ यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकला जिसमें ये कहा गया कि भाई पिरामिल फाउंडेशन के साथ जो और स्वास्थ्य के अधिकारी हैं वो भी कुछ मॉडल साइट लें VHSND की और उनको मॉडल साइट के रूप में विकसित करें, ताकि वो एक पीयर टू पीयर प्रेशर के माध्यम से पूरे ब्लॉक में वो जो लर्निंग है वो फैलें। तो इस प्रकार काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी अवधारणाएं हैं, वो हम लोगों ने वहां पे स्थापित करने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो पूरी चीज स्थापित होती गई। फिर पहले शुरुआत में क्या होता था कि जब हम VHSND के कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे, तो अलग अलग जो विभागों के समन्वय के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन अलाइंड डिपार्टमेंट, वो उतना बेहतर तरीके से नहीं था। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या किया कि विथ थॉट ऑफ क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो लोग आपस में आए, हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव आए, ICDS से ICDS के रिप्रेजेंटेटिव आए, कभी कभी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर करने के लिए पंचायतों के जो सदस्य हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया, और नियमित अंतराल में ऑन अ रेगुलर बेसिस a system of doing monitoring of these activities were established. A discussion was generated within different stakeholders which were actually were the part of this VHSND। तो उसके बाद फिर समझ में आया कि भाई हम लोगों को शुरू में लगता था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट विल कम एंड वर्क, लेकिन ये VHSND was among those platform which actually has helped us lot to activate these platform and build a synergy between aligned department। हम लोग ICDS से जो CDP होता है, हेल्थ से MOIC होता है, उसको साथ बैठाने में कामयाब हुए। उन दोनों ने बैठ के VHSND पे चर्चा की। दोनों ने कहा कि भाई हम अपने अपने तरफ से लोगों को भेजेंगे VHSND देखने के लिए। तो जो ICDS वाले आते थे वो अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे, हेल्थ वाले अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे। पंचायतों को इन्वॉल्व करके हम लोगों ने ये देखा कि भाई अगर लॉजिस्टिकली क्या चीजें हैं जो इनके माध्यम से की जा सकती हैं, हाउ VHSND फंड कैन बी कैपिटलाइज, तो वो पूरा इंटीग्रेशन था। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मॉडल वेयर alignment happened within the government system itself, and these sites emerged as a pilot sites जहां पे आपको लगा कि भाई हाँ, जो चीजें पहले से पेपर में लिखी थी those were actually translated into action in the field। तो ये कुछ उदाहरण थे, बट एट द एंड जो हम लोग यही कहते हैं कि इफ वी आर एबल टू इम्पैक्ट or maintain the quality of VHSND, it can actually transform the health ecosystem of ग्राम पंचायत और विलेज। तो ये है कि इसमें हम लोग जब काम करेंगे तो बहुत, और अगर सघन रूप से जब हम लोगों ने काम किया तो हम लोगों ने देखा कि जो गांव का पूरा इकोसिस्टम है, हेल्थ का इकोसिस्टम है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के संदर्भ में, उसको हम लोग इम्पैक्ट करने में काफी सफल हुए थे। तो ये कुछ हमारी लर्निंग थी और फाइंडिंग थी, लेकिन ये काफी था। तो एक सवाल आया है प्रतिष्ठा जी का, विच ईयर वेयर एवर हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्टेड विद ज्योग्राफी वाज इट। सो बेसिकली जो प्रतिष्ठा जो आपने सवाल पूछा है कि जब हम VHSND के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो जब मैंने अभी भावना जी ने भी कहा था, जब मैंने भी कहा था कि जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 2018 अप्रैल से हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की, तो फिर उसमें हम लोगों के वी हैड अ सीरीज ऑफ डिस्कशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं
कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमको करनी होगी। तो इनिशियली 2-3 महीने के डिस्कशन के बाद ये निकल के आया कि VHSND is a platform where if we invest our energy we can have like many more outcomes. तो फिर हम लोगों ने तब सोचा कि भाई we'll start working on VHSND and it is a platform where everything is there. आप देखें तो सिस्टम के साथ भी इंटरेक्शन है, कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्शन है, अलग अलग जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन है. So it becomes a point where you are actually dealing with comprehensive set of stakeholders, comprehensive set of services. और अगर आप वो पूरा सही तरीके से चैनलाइज कर पाए, जो भी जिसकी जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाए, तो देन you will be able to impact. तो यहाँ पे और तो नहीं बोलेंगे, you will be able to impact at least reproductive, child and maternal health status of that particular area जहाँ पे वो VHSND हो रही है. तो फिर हम लोगों ने शुरुआत में हम लोगों ने we started with having some pilot site. फिर वो पायलट साइट की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई और फिर जो सरकार की गाइडलाइन थी, गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि गाइडलाइन जब आप देखेंगे VHSND की गाइडलाइन भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. इट हैज एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज. तो हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई थोड़ा सा जो आसानी से चीजें हो जाए उनको पहले करते हैं. फिर भावना जी के नेतृत्व में एक लॉजिस्टिक वाला शुरू हुआ, फिर उसी तरीके से चीजें होती रही. थैंक यू. अनूप जी एक काम करेंगे, अनूप जी वी डोंट हैव टाइम, दैट मच टाइम. वी विल डू वन थिंग, आप इसको ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए द रिप्लाई ऑफ दिस, है ना. तो बिकॉज देयर माइट बी सम मोर क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू एड्रेस दोस थिंग्स एंड वी कैन गो फॉर अनदर प्रेजेंटेशन बिकॉज इट्स ऑलरेडी नाउ 7:12 5:12 नाउ. या ओके, ओवर टू यू भावना जी. थैंक यू. प्लीज इसको ना चैट में डाल दीजिएगा. मैं डाल देता हूँ. सो हाँ, या प्रतीक्षा, थैंक यू. So going back, if you have any other questions, please put in on the chat box. We'll try to address all of those. Thank you. Thank you, Anup ji. Thank you so much. So coming to the other part of this session is Health and Wellness Center. Thankfully, I'm sharing English version of the presentation, so I think it will be beneficial. It will benefit most of you. So. आयुष्मान भारत के अंतर्गत there is a health and wellness center in there's a new initiative that has come up, and in the beginning of this program, before health and wellness centers initiative, there was a provision of providing maternal and child health related or adolescent or family planning related services only around the primary health centers or health sub centers and in सबको लेके. But gradually what happened, there was an idea कि maternal and child health के अलावा भी हमारा एक वर्ग है जिसको जो हमारे अलग comprehensive services हैं, चाहे वो हमारी NCD सर्विसेज है, चाहे वो देखा गया कि डायबिटीज और बीपी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नीचे तक जा रही हैं, या फिर हमारा मेंटल हेल्थ हो गया, या आँख की प्रॉब्लम्स का, आँख ऑप्थेमोलॉजी का, ENT की प्रॉब्लम्स, ऑरल केयर की प्रॉब्लम्स, बूढ़े लोगों का इश्यूज रहते हैं, मेंटल हेल्थ हो गए, या एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, या ये सारी चीजें रहती हैं. ये गांव स्तर पे भी रहती है और यहाँ के लिए भी प्राइमरी हेल्थ केयर होना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लाए गए, और इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बहुत सारी सर्विसेज है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर ऑफ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज का आइडिया लाया गया. एंड नेक्स्ट कर लीजिए. सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट बेसिकली इज टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, and that too very close to habitat. Before this initiative, most of the programs were around the RCH, maternal and child health related only. So very few programs like TB and some of other programs were at the level of Asha, where the mobilization used to happen. But at sub-center level, that any such kind of basic services were not provided. But this concept of health and wellness center came up and ensured that comprehensive public health care is provided across all the sections of the population. So here now, earlier the sub-center was only staffed
by A&M. Yeah. Bhavna, 1 second. Just to set a little more context around the concept of health and wellness centers. See, the focus on RCH, or reproductive and child health, which means pregnancy related work, and children under the age of 5 years. India's public health system's capacity to provide services was actually stretched because of just providing the services for mother and child. That itself was too much, and hence it took a lot of time for us to move from just providing the maternal and child health services to also providing non-communicable disease related interventions. NCD जब हम बोलते हैं वो non-communicable diseases है, मतलब those diseases that do not spread from one person to another by contact. Okay, and these diseases include diabetes, hypertension, mental health related issues, respiratory problems, and so on. All of these problems, it is very difficult to handle by one A&M at the village level. And so the concept of health and wellness center is like a upgradation of something that we were providing to mother and children, increase it and give more services in terms of package of services to a larger population. So that is the premise why health and wellness centers came. One other additional step is also that this is also during the period that there is a rapid increase in the number of cases of diabetes, hypertension, and respiratory illnesses, including conditions like cancers, conditions like any of the other respiratory illnesses that you can look at. All of these conditions, non-communicable diseases, today they cater to almost, they account for almost 60% of all deaths. So अगर एक जगह में 100 लोग मरते हैं तो उसमें 60 लोग, 60 people die because of a non-communicable disease. 60 people. So that's the kind of impact. That is the kind of problem that we are talking about. Therefore, the whole concept of health and wellness centers were mooted because there was a change in the disease profile in the country, because our ability to provide services is larger now, and our responsibility to provide services to a larger population is also large. Okay? Bhavna, over to you. Thank you. So what was done is specifically was, in addition to the earlier, there was only one A&M at sub-center level. Later on, what was decided that there is a provision of additional one more staff who is trained by government itself for providing primary health care of the other services other than maternal and child health related service, like NCD services are there. So those kind of services also, there was a provision of training for staff nurses को ही या ANMs जो GNM या BSc nursing वाली जो नर्सेज होती है उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देके एडिशनल एक स्टाफ बिठाया गया सब सेंटर लेवल पे टू एंश्योर दैट ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट द सब सेंटर लेवल. सो अब क्या क्वांटिनम ऑफ केयर किया जाता है? वी कैन स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So basically, if you can see, it's very small. If you can zoom it through your phones. You can see that there is a provision at the Asha level or multipurpose worker level that happens at the village level. Later on, where the population enumeration, outreach services, specifically around screening of these services like VHSND and other things happen. Community-based screening happens, risk assessment happens, awareness generation happens. All these things are happening at the level of Asha. Later on, the first level care is done, the diagnostic is done, drug dispensation is done, record keeping is done, telehealth is done, that we will discuss in coming slides. Also, referral to the medical officer is done. So all these kind of services are done at the level of
sub health center, which is now PHC, which is now health and wellness center sub center, we call it now. Later on, the continuum of care goes to PHC or urban PHC in terms of small towns or other towns. There the diagnosis and prescription happens. So this is very clear that jo prescription hota hai, that always happen at the level of PHC when there is a medical officer. So कोई भी ANM को या CHO को ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन लिखने का परमिशन नहीं होता है, उनको बस ड्रग डिस्पेंशन का परमिशन रहता है. तो यहाँ पर सारे पेशेंट्स को भेजा जाता है डायरेक्टली या टेली हेल्थ के द्वारा डॉक्टर से बात कराई जाती है, प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है, सब सेंटर लेवल पे उनको दवाइयां दी जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्रग डिस्पेंशन हैपेंस एट द सब हेल्थ सेंटर एंड द प्रिस्क्रिप्शन शुड हैपन एट द लेवल ऑफ PHC. PHC पे एक मेडिकल ऑफिसर होने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. और उसके बाद अगर और कोई एडवांस डायग्नोसिस है या कोई कॉम्प्लिकेशन असेसमेंट है या कोई और तरीके का प्रॉब्लम है और आयुष्मान भारत के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई सर्जरी या कोई और तरीके का सपोर्ट चाहिए, वो एडवांस लेवल पे वो ब्लॉक लेवल की CHC या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होता है. सो इस तरीके से जो पहले जैसे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को लेके भी हम लोग VHSND लेवल पे हम लोग विलेज लेवल पे बात करते थे, फिर उसको PHC लेवल पे लेके सब सेंटर लेवल पे लेके आते थे, फिर PHC लेवल पे और एडवांस सर्विसेज देते थे और सबसे ज्यादा एडवांस सर्विसेज हम ब्लॉक या CHC FRUs वगैरह पे देते थे. इसी तरीके पे जो NCD डिजीजेज है उसके लिए भी ये कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर का एक पूरा फैसिलिटी अवेलेबल कराया गया अंडर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एट द सब at the health and wellness center program. Next, so पहले we can go to the next slide. So under this so PHC लेवल पे जो हमारे डॉक्टर्स होना बहुत जरूरी है आज की डेट में. जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियंस, LHVs, रूरल में कुछ इस तरीके से एक मल्टीपर्पज वर्कर और 5 आशा है. अर्बन एरियाज में भी इसी तरीके का कुछ प्रोविजन कराया जाता है. आशाएं और मल्टीपर्पज वर्कर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. और उसके अंतर्गत एक PHC या हेल्थ सब सेंटर जो पहले था उसको उसके अंदर जैसे पहले 5 सब सेंटर्स हुआ करते थे, सेम अभी भी वैसे है. बस इतना है कि अब वहां पर एक ANM के अलावा वहां पर एक हमें एडिशनल CHO मिल गई है. उसको हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं, जो कि ट्रेंड होती है. उसके अलावा आपके पास प्रोविजन है मेल मल्टीपर्पज वर्कर मेल होने का, बट आज की डेट में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सच पीपल. बट आशाएं जैसा हम सब जानते हैं, एक विलेज जिसका पॉपुलेशन अगर 1000 है, 1000 के लगभग रहता है, तो एक विलेज में एक आशा रहती है. तो इस तरीके से ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है. सो चेंजेस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में? एक तो जो नया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पहले सब सेंटर में नेक्स्ट स्लाइड में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कई सारी चीजें हुई है. अगर आप भी आज की डेट में आपने यहाँ पे गांव में जाएंगे तो फैसिलिटी लेवल पे ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है, क्योंकि हम लोग टेली मेडिसिन का यूज करते हैं. तो बिजली का बैकअप होना या फिर पानी का सप्लाई होना, रोड की अवेलेबिलिटी, सिटीजन चार्टर या और इंटरनेट की सर्विसेज, ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे इंश्योर कराना इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पर योगा के लिए भी कुछ जगह होना जो अनिवार्य बताया गया है. नेक्स्ट, और अगर आप आज की डेट में जाएंगे पिछले कुछ फ्यू इयर्स में काफी ज्यादा चेंज इस लेवल पे सारे जहां पर भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आएगा आपको ये सारी चीजें वहां जरूर मिलेंगी. इनमें से काफी हद तक काफी चीजें वहां पे आपको जरूर मिलेंगी. नेक्स्ट कीजिए डिस्कस. सो जैसा डॉक्टर शैलेंद्र बता रहे थे कि नाउ दी सर्विसेज हैव एक्सपैंडेड. अब पहले की जो सर्विसेज दी जाती थी, चाहे वो चाइल्ड केयर इन प्रेगनेंसी हो, चाइल्ड बर्थ हो,
neonatal health हो या फिर adolescent health care हो, family planning services हो, या फिर communicable diseases हो, या फिर छोटे बहुत ailments को OPD हो. Now there are few more additions that have been done, specifically around the screening, prevention of non-communicable diseases, ophthalmic and ENT problems, basic oral care, elderly palliative care, emergency services like burns and traumas, as well as the screening of and basic management of maternal and health ailments. So non-communicable diseases में जैसे डॉक्टर शैलेंद्र बता रहे थे, BP आता है, we have BP, we have diabetes, we have lots of cancers, breast cancer and oral cancer को यहाँ थोड़ा बहुत importance दिया गया है क्योंकि उनका prevalence काफी ज्यादा बढ़ रहा है with time. So these services are now provided at the level of health and wellness center. Next. So I have briefly shared here which are the key NCD's common problems which are under this program. It is hypertension, diabetes, cervical cancer, breast cancer, and oral cancer. Next. So this is something that happens at the level of village where the population-based screening happens for diabetes mellitus, hypertension, and 3 common cancers like cervical cancer, breast cancer, and oral cancer. All the target beneficiaries are men and women above 30 years and above, and this set of services are being part of comprehensive public health care. So what happens that at the level of village, there is a proper screening that happens with the support of Asha, and the incentive is provided for this to Asha as well. So she fills out a family folder, that's called a CBAC form, and under this she has to document all the family members and specifically have to take some additional information for the people who are above 30 years, specifically all the men and women, and have to assess that who are among these people who are the key risk assessment होता है जिसमें she finds out if there is a particular BMI बहुत ज्यादा है या फिर she has some common issues या family background में ऐसा कोई issues है, they are taking some kind of alcohol or tobacco and other things. So that kind of risk assessment is something that she does, and she shares these lists with CHO, and later on CHO comes in the field and does the screening, basic screening of the population, and later on documents and ensures the proper follow-up of these patients with the doctor. Next. So here roles and responsibilities or Asha and ANMs are specifically that Asha is listing all these adults. She completes the CBAC form of the community. She undertakes, there are few health promotion activities that also happen within the community under this program. She has to undertake those health promotion activities. Also, she follows up the treatment adherence with the populations once the prescription happens. So, and also ensures the lifestyle changes happen within the population. And ANM or CHO at the same time ensures that population enumeration happens, CBAC form review happens, data entry. There is an NCD application from Government of India. So data entry should happen, screening and early referral should happen, and the coordination with Asha and other people which are also involved under this program are also done. Next, CBAC form specifically is talking about so CBAC form again is a form which is very important part of it, specifically for non-communicable diseases. It is a starting point of NCD services. It's a kind of family diary which contains all the details of all the family, and it documents various information specifically about the members and specifically those people who are above 30 years of age.
Next. So there is a provision of there's a provision of health promotion, or we can say health promotion days across all the year. So specifically there, where they normally do the health promotion through talk approach, where they talk about the specifically Asha does this activity, where they talk about the NCDs and its risk factors. They advise the individuals that and the families that what to do to reduce the factors, and also lead the community to take action to reduce these all NCD related problems or NCD related health behaviors. To also ensures that there are various health community based organizations that come up and helps for providing better services. Also they also talk about NCDs and other risk factors and self-help approaches to reduce these risks. So this approach is taken up through Asha within the community. Next. So every month, health sub-center, HWC and PHC Health and Wellness Center have to celebrate at least 2 promotional health promotion days every month. And what happens that these 200 rupees are allocated for this activity. Asha is trained for this activity through medical officers or CHO, and one week prior to the subject, and later on event theme is discussed and written on the chart paper and pasted over the walls of health and wellness centers, and all the activities and photographs are uploaded in Ayushman Bharat HWC portal and emailed to the for documentation purposes. Next, what you will see is the health and wellness center calendar, where you can see that what kind of days are celebrated under health and wellness center, like youth day is there, save girl child day is there, anti-leprosy day is there. So this way various health related promotional days are celebrated every year. This is uniform across all the states, and it might get changed, but there's also provision of yoga sessions also, because there is again fund is provided under PIP, where they can locally arrange some yoga instructor and do train our population for this, to ensure that for better preventive and other preventive care for NCDs. There is a provision of quarterly health camp also, where the fund is around 22,500 is spent, and these camps are to support and officialize locally do the screening of NCDs. Also health camps are organized where there are hotspots. According to the Asha, she thinks that this area is more, might be having more people with NCDs, so that kind of screening happens. There's a provision of nukkad nataks, skates and other things that can be organized with help of local artists and self-help groups. Every camps again has to be uploaded with health and wellness center portal formats and email to the block level. So altogether, these health camps, these health promotion days, the screening happens and ensures that these people are properly screened. They are taken up, followed up at the level of medical officer, and later on once the doctor provides the prescribes the medicine, the services are provided, the medicines are dispensed at the level of health and wellness center sub center. And after that, once the adherence is very important, that is ensured through Asha. And these kind of health promotion days also helps to adhere to the good habits that they must follow once the NCD is these diseases are diagnosed within the population. There's another provision of having
telehealth, which is Government of India's initiative. Here what happens is Sanjeevani OPD is there. Online, the patients can connect to the doctor online through their smartphones, and also they can come to sub-center, health and wellness center, where they can connect to and they can meet CHO and connect to the doctor. There only the doctor provides the prescribes the medicine. They don't have to go to PHC, health and wellness center. They can just get prescription from eSanjeevani app only, and the medicine will be prescribed by the CHO itself at the health and wellness center. That is another. There are issues in this currently. Many times doctors are not available, but most of the time, specifically around COVID, this has really helped people at the level of villages. Next. So here you can see that patients can also themselves download it from their Android phones, and they can connect to the doctors. They can also go to the CHO, health and wellness center, sub-center, and get if they don't have any Android phones, and they can connect through CHOs. Also, there is a provision of having web portal is also there, where they can connect to the doctors. So there are few ways how they can connect to this app to the doctors at their doorstep again. So altogether, the CHO's role is very important, because she is the one of the trained person here. So her job specifically comes to ensure that they have to tell about this eSanjeevani app, because doctors are not available. That many doctors are not available at the level of PHC, health and wellness center. So how they can use these eSanjeevani application, how they can train Ashas and ANMs on this, and how they can facilitate consultation with the doctors also. So this is a technical, that's a hub overall, how it specifically in UP, how it happens. So there is a continuum of care. What happens that there are SPOCs at the sub-center, HWC level, at the PHC level also, which can later on connect to the doctors which are there at various hospitals. And they can again go to the specialists, which are specifically around cardiologists, medicines, gynecologists, and pediatricians at hub level, which can again help them in getting the better services at the level of health and wellness center, sub-center, and PHCs. So here you can see the overall comprehensive public health care is providing services to the villagers at the level of their, at the max, at their health sub-center, which is just at the max 5 to 10 to 15 kilometers, not that far from their own house, rather than going to the district hospital and getting medicine from a specialist, which they are not sure whether they will also get or not. So it is a good initiative by Government of India. And later on, yes, there are issues currently also in terms of availability of doctors, in terms of availability of medicines. It's in a very initial stage, but it's a very good steps towards providing the comprehensive public health care, primary health care to the population. Great. Thank you, Bhavna. Shiva, I have not seen any question come on the chat box. If there are any other points or questions, if somebody wants to ask or wants to put on the chat box, we are free to take those questions. But I see that a large number of people also are from our ADT program. So they already have a sense of this. So that's why it must be questions might be less, but
Happy to take So questions. there are a lot of other folks from education, water, and also fellows. So yeah, this subject may be new for them. Sure. कोई question है तो पूछ लीजिए. Happy to answer. If you guys don't have a question, then I'll give a few suggestions. I can ask questions also, but I feel maybe giving suggestions is better. So I would suggest that those of you at least who have not been in the health sector and who have come from the education sector, it would be a good idea for you all, if you've already not done, if you've already done it, great. But if you've already sort of, if you have not done, then try and visit each health facility. Visit a primary health center, visit a health and wellness center, visit a district hospital, visit an FRU, try to understand what are the differences, what kind of cases, what kind of patients come to which facility, and therefore what are the ways in which you can respond to them. I think that's certainly one thing that you may want to do. And the second one I would suggest definitely that you should do is spend one day each with the AAAs. Spend one day with an Anganwadi worker, spend one day with an Asha worker, and spend a day with ANM. Just be her shadow, walk around. You don't have to ask any questions, just observe, be an observer, silent observer, and see what all they do. As a postgraduate student, we used to do that. And trust me, a lot of our experiences stem from that one day spent with these AAAs. It's a very, very enriching experience. So please feel free to do that. I would suggest these two would be very, very critical. And wherever possible, talk to people, talk to communities, talk and find out what their needs are. I think identifying the healthcare needs is very, very critical. So these are the three things I would suggest you all to do. Pratishta is asking, I need help to understand the evolution of PSMRI till date in brief. In zones, we are partnering with hyperlocal NGOs in NGO conclaves. Introducing for each domain helps present a common multi-domain organization. Okay, cool. But see, we can go on and explain the evolution of Piramal Swasthya, PSMRI. But there are other people here also. Maybe I'll request Hardeep to give a quick overview of the evolution of Piramal Swasthya. He has been there longer than me, so it's probably befitting that he takes us through. Hardeep, can I request you to? Yes, sure. Why not? So I'll do it in brief. I'll keep it very short. And thanks for asking that. I think that will also help. Pratishta, thanks for asking, because it helps understand where we are today and why we are where we are, so to say. So in very short, I think we were born in the year 2007 as an organization. And we are an organization, Piramal Swasthya is an NGO, as all of us know, in the primary public healthcare space, so to say. And so because we are working in the primary healthcare, public healthcare space, just like every other organization, you are always born to solve a problem, right? That's why we exist in the social sector. So the first problem that we actually tried to solve when Piramal Swasthya was conceptualized was the problem of accessibility, availability, and affordability of services. Now, what does that mean basically? Is that villager, just imagine a villager in the remotest of areas in a village or a very remote area anywhere in the country. And now this lady or this guy, if he or she falls sick or needs any medical attention, she may have to travel multiple kilometers to get that. And in spite of that, if this person reaches a subcenter of a PHC, chances are that it may or may not be manned. That's the problem of accessibility of services or availability of services, right? And then, of course, there is an element of spending money out of pocket to be able to get that service. So money in terms of, simply losing on the labor for the day, the earnings for the day, or it could also be because there was no practitioner available in the government this setup. He or she might have to go to a private practitioner and spend money. So
Back in 2007, when Swasthya was born, there weren't as many sub-centers or PHCs or the centers that we talk about as they are today. So the problem of accessibility, availability still remains today also, but it is not as acute as it was those days. So what we did was we innovated and we launched the first large-scale mobile medical unit project in the state of Andhra Pradesh. It was the first ever model of its kind at that scale, more than 400 mobile medical units serving the remotest geographies and the remotest populations like the one I just spoke about. And also a 104 health helpline. So many of you might know, but many of you might not know that the first ever 104 health helpline at that scale, statewide, in a PPP mode with the state government was done by Piramal Swasthya with the government of Andhra Pradesh. So while we did this, so this is the model we first started off with. And then as a philosophy, we have always believed in a 3-stage process. As a foundation also we do that. Okay, first we say that let us pilot, small scale, then we demonstrate, and then we scale up. So Piramal Foundation traditionally usually always spends its money on innovations and to some extent on demonstration. And then we believe that the ecosystem should take over. The funding should either come from a government or from some other funding organization and so on. And if you look at the 104 health helplines and the MMUs today, these projects models have been taken over by the ecosystem, and there are 104s mushrooming all over the country. There are mobile medical units on PPP mode, and Government of India is funding them. So likewise, the journey continued, and then around 2014-15, to keep the long story short, we started thinking now that these models have evolved, gone through the 3-stage process of pilot, demonstration, and scale up, what is the next level of problem that we want to solve? So as a public health team, we said that the other big problem with the government is the fact that governments are not able to implement well. While they have very good policies and SOPs in place, those policies are made centrally, but they have to be implemented locally. Unfortunately, they are not contextualized to the local requirements, and that's how probably the ADT partnership with Niti Aayog was born. And what we have done in the ADT work over the last 3.5 years in partnership with Niti Aayog in 25 districts has basically been facilitating implementation. We have actually been helping the government implement better. We have been working with the frontline workers to implement better. We have been helping them to do model VHSNDs better. We have been helping them improve the quality of services in the first referral units, in the health and wellness centers through facility assessments, capacity building, basically tagging along with them. Unlike what we always did in the past, which was direct implementation. MMUs and 104s, we continue to do that and we will continue to do that, but that's direct implementation. But under the ADT program, what we did was completely indirect implementation, facilitate implementation, trying to solve the problem. While we are good at implementation, governments are usually not so good at implementation, so that's the problem we try to solve. And that's how, as an organization, in short, we have been evolving. We did a lot of pilots. Araku mein bhi pilots kiye the with the tribal community, and that's how the tribal health collaborative is born. Again, the 3-stage process, small pilot in some hamlets of Araku, scaled up to the entire district, demonstrated, and then now it's almost taken up by the ecosystem. Funders like USAID are funding it, just like the MMU and the 104 evolution. And now, similar things are happening with the ADT model also. In fact, the THC model is actually a combination, I would say, of the ADT work and the Araku work that we did. That's how the tribal health collaborative has evolved. So in short, Pratishtha, if that answers your question, this is how the evolution came. Thank you. Thanks, Hardeep. Thank you very much. Yeah, any other questions, queries? Okay, cool. So if that is the case, Shiva, then we are almost there. It's already 5:50. If you want to close the conversation, then we can. So before we close, Doc, I would request all the participants to put their emotions in the chat box. How did they feel about this particular session, and also about the kind of program that we are doing, series of sessions? Are they helping them? Should we improvise
if we have to improvise, what are their suggestions? So anything top of their mind, please put it in the chat box. ये बहुत अच्छा लगा, मजा आया बहुत, समीर बोल रहा है. So Mithilesh here, am I audible? Yes, Mithilesh. So I don't have a question, rather I would request that please share the PPTs also, because these all have technical terminologies, so which needs follow up to understand and learn it. So please share it. So I'll put it at a central server location and then I'll share the link with everyone so that you can access. Sure. Okay, Yeah, I think we can do it with all the decks of all the presenters in the same link, so that everybody can access it whenever they want. Super. So Pratishtha, I think the channel, see, we look at VHSND as a platform. Okay. Village Health Sanitation and Nutrition Day offers an opportunity to add and delete services, customize the services to a particular population. For example, if I'm doing Village Health Sanitation and Nutrition Day in a district, in a block, in a village where malaria is very common, then one of my services will also be to collect blood samples for testing of malaria. But if I'm doing the same thing in a place where TB is very common, then I would want to do services related to TB. If I want to, in malaria, I may want to distribute insecticide treated nets. In TB, I may want to do a session on, how do you do cough appropriate behavior, cough hygiene kind of a model. So I look at Village Health Sanitation and Nutrition Day, and when I say I'm saying Piramal Swasthya looks at Village Health Sanitation and Nutrition Day as a platform to provide a basket of services. If you want to call it a channel, fine. But our understanding of a channel is a little more, I would say VHSND is a little more broader kind of a model of service delivery, whereas channel is more of a network or creating a sort of an engagement with communities. So there's a slight difference between the two if I have to differentiate. Yeah. The other advantage is that with a Village Health Sanitation and Nutrition Day, you can actually, if VHSND is done properly, if the VHSNCs are set up and you do VHSND properly, a large percentage of problems can actually be taken care of. Whereas a channel like PRI is predominantly not for healthcare service delivery, but for a set of interventions that are more on the lines of awareness creation, promotion, provision of something like money or financial support to the VHSND and so on. So I think the purposes are very different. And therefore, I would look at it as not really a channel, but as a platform. Yeah, grassroots level forum. Yeah, I would think so. In general, yeah. So one question by Abhinandan Hardeep, maybe probably this can be covered during your session. Thanks to all the speakers, it was a much learning experience for me. I would like to suggest to keep a session on Niti Aayog indicators for ADC district and role of Piramal Foundation in meeting those goals. Okay, so we will have to design a different session for that. The session which I am conducting next week is on facilities, basically health facilities. But we can always think of this also. Yeah, we will keep this in mind. I guess a lot of discussion on health facilities would have anyways happened today, since we have discussed VHSND. I heard Bhavna speaking, health and wellness center, CHO. So I'm thinking of keeping a quiz on Friday, next Friday. Pre-test. Let's see. आपका काम आसान हो गया क्या? Exactly. इसीलिए मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट क्विज ही कर देता हूँ उस दिन. फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाला क्विज चल सकता है.
वो चल सकता है। उसके अलावा कौन सा कहाँ आता है वाला पता नहीं। वो पता नहीं। लेकिन है आइडिया इनोवेटिव। हाँ। Good. I think it has been a great session. Thank you so much, Dr. Yeah. Hegde. Thank you so much, Dr. Bhavna. Thanks for spending your 2 hours for the team. Thank you for calling us. And I'm revisiting my old good days of ADT. It has really been an enriching experience for me for last 4 years. And yeah, happy to be here. Thank you so much. So yeah, Thank you, thanks so Bhavna. much again. Yeah, I Thank think you, this is going Bhavna. to be a very helpful session also, because the next 2 sessions are in a way a continuation of what has been done today. Yeah. So Dr. Vibhor will be presenting next Tuesday, and the topic is, Vibhor, you are presenting on? So it would be the health system and the structure in the human resource. Yes, super. And then Thursday, and I will be there to assist him if he needs any assistance. वो उसको लगेगा नहीं, मुझे पता है वैसे, but I really want to show my face that day. And Thursday, I will be presenting along with Vibhor. Friday, sorry, next Friday I will be presenting along with Dr. Vibhor, and that will be about health facilities. So from VHSND Health and Wellness Center to health system to health facilities. I think it's in a series. So please ask all your friends to join in next Tuesday and Friday. Let's hope we have more attendance. It's going to be a very, very interesting session. Thank you. Thanks, Shiva. Over to you. Thank you, Dr. Bhavna. Thank you, Dr. Hegde. So great thanks to all the participants. I think I really enjoyed this session. The success of this session is participants were very keen and very curious about the subject, and they asked a lot of questions. I think this was really helpful. So thank you all. See you in the next session. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thanks everybody for attending. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shalin ji and Bhavna ji. Thank you, Silent GM. Thank you. Thank you, everyone. Wonderful session.